Hi, good evening to all of you guys. Am I audible, visible? My name is Rajiv Markande. I'll be taking today's session. If I'm visible, audible, my voice reaching all of you, type Y. Okay. So yeah. So in this session, we shall be taking up a strategy approach, how to handle placement interviews or in general interviews. So this particular exercise would be part and parcel throughout, because for the first job, second job, third job, we keep on changing, moving on to the higher ladder, climb higher, and every time we have to go through this particular exercise. Once we clear, for example, in your case, you'll have to sit for written aptitude. Then after cracking written aptitude, then you have to face GDPIs. In some of the companies, they go for essay writing even, but this is very, very important. Now, to realize the importance of this particular exercise called interview, you keep in mind from now onwards that your 4 years of engineering is equal to 15 minutes, because in 15 minutes this exercise generally will go up to 15 minutes, 20 minutes at the max per interview. So your 4 years efforts, hard work, sincerity, and your score, you being topper, etc., will all boil down to 15 minutes. In 15 minutes, you are in or you are out. So 4 years is equal to 15 minutes. That's why it's very important to do our homework to prepare this, prepare for these exercises, this interview session in reality, seriously. 4 years is equal to 15 minutes. Either you are in or you are out. So keeping this in mind, let's start with this session. So my name is Rajiv Markande. You can watch the image on the screen. With the image right now, you can see the same guy is taking this lecture also. Jokes apart. So let's start with today's session. So what is PI? As we all know, it is primarily formal meeting in person, because the first step is you'll be sending your resume to respective companies coming to your campuses. And after you being shortlisted, first of all, your resume is only important for the interview purpose. You already have been recommended to various companies by your college placement committees, coordinators, officers. So you're already been recommended. For the second or third interview, your piece of a paper that called resume would be very important. But your first interview will also revolve around your scores, your internship projects, and your resume, whatever you mentioned. So in person, we want to see the candidate. Why? To assess the qualification, or you can say potential of the candidate. It's very important to check whether the candidate is potential or not, because in resume also, if you write that 10th class score was this, 12th class score was this, you have done these internship, these projects with these companies. But in person, we want to see whether your resume, whatever you mentioned in your resume, is exactly matching with you in person or not. Would you able to stand, back up, justify the claims made by you in your resume? That's why we meet you in person, and we want to check primarily your potential, whether you are fit for the job offered by the company or not. That's the purpose of PI. So normally two, three panelists, and consisting of industry experts, your college placement committee head or functional heads, and HR from the company. And sometimes big companies will bring in psychologists along. So any interview may or may not have fixed structure. It means that they can ask you a question from any department. Let it be your academics, let it be your curriculars, extracurriculars, your strengths and weaknesses, etc. But it is not that they'll ask anything which is very, very uncommon. Or fixed structure doesn't mean that they will cancel your interview and they have party with you. No, may or may not have fixed structure means they can ask different questions from different areas. That's called. It is not that from every candidate they'll start to introduce yourself, your strengths and weaknesses. This may or may not happen every time. So why? What's the purpose of
You already have proved yourself in 10th class. You already have proved yourself in 12th class. You're doing fine in your engineering colleges also. At least you've got decent CGP. Let it be 6, 7, 8, or exceptionally good CGP like 9, 9.8, etc. You already have proved yourself academically. But why we want to check, why this exercise has been kept, why we have interviews in place? The purpose is primarily, guys, important is your thought process. And most of us are terribly mistaken about personality. We generally take the outlooks of a person. Personality is not the outlooks. जो आप दिखते हो वो personality नहीं होती है. This is only 2% of your personality. 98% is your thought process. So exactly in the interview, we want to check the personality or potential in terms of thought process, in terms of your attitude towards the responsibilities, means positive or negative kind of, nothing more than this. Your commitment level, looking at your scorecard, we can easily judge your potential or commitment level. But exactly we try to give you certain hypothetical situation where we try to assess your reaction, your take on different situation. वहां से हमें आपका commitment level का पता लगता है. And then we try to analyze your reaction to different situations. Hypothetical situations sometimes we create. Had this been the case, if you are made Prime Minister of India, then how would you handle farmers protest happening at this New Delhi, at this places? So how would you handle this situation? How would you have handled this situation had you been the Prime Minister of India? So ऐसी situation में हम डाल देते हैं so as to check your thought process. Simply you cannot answer this question, sir, had I been the Prime Minister of India or the Home Minister of India, I would have called army and curbed the farmers protest. This would be not be the right answer. We cannot answer this question in a very, very aggressive mode. So we want to check your thought process on different matters also by your opinions. So that's why primarily it is about your thought process, your potential. So domain of the interview, guys, what exactly would be the two areas that we want to check your knowledge? There are two domains only, primarily knowledge about you. In knowledge about you, we want to know about your introduction, a little bit about your family, hobbies, interests, strengths, weaknesses, subject studied, and your career plans. Why you want to, for example, why you want to join this company or why you want to go for this profile. I'll be giving you tips regarding how to answer each and every question. And secondly, knowledge about your environment in the not in terms of only global warming environment, socio-political environment, political environment, geopolitical environment, and the scientific aspect of environment also, means knowledge about your city, state, country, overall social, political environment, etc. We want your opinion on these areas also, because you all know your subject areas, you all know about your 10th class, you know, all know about your school, your family, but what about other things which are happening around? Because ultimately after your engineering, you'll be joining different companies, and all companies, entire economy is impacted by the policies, government policies, and social environment, political environment, and other such factors impacting the economy. If economy is impacted, likewise it has been impacted by corona pandemic. अभी corona हुआ तो उससे economy हम सबका, पूरे nation का, पूरे world का down हो गया. So in down, when the economy is in downturn, down mode, you see less number of jobs coming out of the companies. So ये मानना at your age that farmer protest का या किसी भी चीज का हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, we are wrong. Everything would directly or indirectly impact our status in the society or our well-being in the society. That's why we want to know whether the candidate is aware of happenings or not. So domain of the interview, knowledge about you and knowledge about environment. Now coming back to the typical questions, evaluation parameters. First of all, during the interview, guys, we assess your potential on these areas. For example, your personality, your thought process, again, general disposition, how you walk, you sit, your mannerism, 10% weightage. Body language, the most important element in an interview or communication exercise. Interview is one of the communication exercises. Body language, the way you sit, you make eye contact with the panel. I'm assuming that right now online interviews would be there, so I'll be giving you a couple of hints regarding how to handle online interviews even. So aap eye contact, listening style, your ability to listen. Listening reflects maturity. Listening reflects maturity, because most of the time we think that communication is equal to English speaking. The way you speak English is your personality, is your communication. No, even listening is more important than speaking, because that's why God has given one mouth and 2 ears.
Keep this in mind always. Subject knowledge, very, very important, because you all be sitting for technical placements, engineering companies, core or non-core companies. So your subject knowledge would be tested upon. Definitely, we'll be asking a couple of questions regarding your subjects. Likewise, we start with what was your favorite subject during graduation. You need to come up with 1 or 2 subjects. So please revise fundamentals related to your favorite areas. We'll be asking questions. They'll be asking questions because ultimately it is proportional to engineering companies. You should have knowledge of the subject also. Your communication skills, guys, sorry, in terms of command over English language, your ability to express your views, and don't be scared. Most of the students are not comfortable with interviews because they think that they'll not be able to speak English properly. वो बोल नहीं पाएंगे, थोड़ा सा अटक जाएंगे. So communication is not equal to using good vocabulary or fluent English. Communication means your ability to put your point across. आप अगर अपनी बात को अच्छी तरह से सामने रख पाएं, is called communication. But 99.99%, please keep this in mind that in any interview, you need to use English language, right? General awareness, 10% weightage, and clarity of goals. Clarity of goals, I'll be telling you that what exactly will be clarity of goals. So these are the couple of parameters on which you will be evaluated during the interview. As soon as you enter the interview room, or let's say you open the screen, your laptop screen or computer screen for online interview, will be assessing your facial expression, body gesture, the way you speak, way you answer any question, your thought, opinions, etc. In online interviews also, we can assess your body language, looking at the expressions you are using to answer any particular question, the time you are taking, the kind of answers you are giving. They all reflect your maturity. Ultimately, it is everything is about thought process. हमारे ऊपर वाले माले में क्या है? On papers, on resume, everyone looks fine. But when it comes to meeting in person interviews, then the story will change. So, and second time I'm telling you, your 4 years of engineering is equal to 15 minutes. Either you are selected or you are rejected. So make sure that you do your homework properly. That's why we have kept this session, I think. Types of PI question, guys. On academic front, they would be interested in asking what was your main subject, favorite subject studied. So we will be asking a couple of fundamentals related to your favorite subject. Your internship, your projects. Personal questions would be something like introduce yourself. Very, very important question in any interview. Your family, about your strengths and weaknesses. If you have any role model, what learnings you have taken from your role model, any incident, any specific instance or incident which has impacted you a lot, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे. Then your hobbies, interest, extracurricular activities, their purpose, why you took part in, what you learned out of that, achievements, if any, let it be academic or non-academic achievements. General knowledge would be about city, country, and the universe a little. For example, American President Donald Trump tha, now Joe Biden has taken over, what happened exactly, what you have to say about American election procedures, etc. So these are the type of questions. Career, why you want to pursue this course, why you want to get into this job, why you want this profile, what are your career plans. अब इसका आंसर ऐसे ही नहीं दे सकते कि सर हम कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे थे, आई वांट अ जॉब, जो टिपिकल इंडियन मेंटेलिटी आंसर, सर आई वांट जॉब, आई वांट सैलरी. सैलरी से क्या करोगे सर? आई परचेज 1 कार फॉर मी, 1 हाउस फॉर माई सेल्फ एंड कपल ऑफ गैजेट्स. एक आईफोन खरीदना है मुझे और 2-3 चीजें और खरीदनी है. दैट्स व्हाई आई वांट सैलरी. चलो सैलरी के बाद चलो सैलरी आएगी, फिर क्या करोगे सर? घर वाले कह रहे हैं जैसे ये नौकरी मिलेगी, अच्छी सी शादी भी हो जाएगी. व्हाट नॉनसेंस. कम आउट ऑफ दिस इंडियन वाला मेंटेलिटी दैट जॉब इज इक्वल टू सैलरी, सैलरी इक्वल टू जॉब. व्हाट इंजीनियरिंग हैज टू डू दिस. किसी को भी कोई भी जॉब मिल सकता है आफ्टर डूइंग एनी डिग्री. व्हाई इंजीनियरिंग एंड व्हाई स्पेसिफिकली दिस जॉब? इसका आंसर कैसे करना है, आई विल बी टेलिंग यू. And other situation based questions, extempore questions, immediately out of blues we can ask any question to check your common sense, to check your creative thinking, lateral instincts, out of box thinking, etc. So these are the typical type of PI questions that they'll be throwing at you. So these are the questions in specific sentences. For example, tell me something about you is equal to introduce yourself. Why you want to pursue this course or job? What are your career goals? What are your strengths and weaknesses? Your favorite subject or subject studies. About very good companies, they'll be focusing too much on your values and belief. I'm not talking about the philosophy. You should be philosopher to get any job, but values like punctuality, discipline, sincerity, maintaining, respecting deadlines, etc. Very important. Most of the big companies, they'll be looking after this particular aspect in your personality. Your hobbies and interests.
extracurricular activities, about your work experience, but in your case it would be project, internship and project. So these are the typical questions, and we'll be handling each question one by one. I'll be giving you tips, important tips to handle these questions. So sometimes to state our strength and weakness, we can use the words which you see on your screen. For example, hardworking nature, persuasiveness, initiative taker, आप काम का initiative लेते हैं. Meticulousness means very focused and diligent. You have got leadership traits. You believe in entrepreneurship. Value for values. Perseverance means one of these, few of these words we can use. But simply we should not use these words as such कि मैंने आज सेशन लिया, मैंने आपको स्क्रीन दिखाई है ना, आपने ये सर ने बोला कि आप एक बार हार्ड वर्क बोल दो, हार्ड वर्किंग बोल दो, मेटिकुलसनेस बोल दो, या वो लीडरशिप ट्रेट और आपको जॉब मिल जाएगी. नो, you have to show these qualities in us by specific examples that I'll be telling you. Weakness, sometimes I feel overconfident. Sometimes I'm slow starter. I set very high goals for myself. I'm stubborn, jiddi adiyal. Procrastination means to keep on postponing the task. Procrastination means जो काम को टालता रहता है. Means आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी जीना है बरसों, जब तक दम में है दम, कमाएंगे पापा, बनाएगी मम्मा, खाएंगे हम. This kind of attitude is called procrastination. Parul, how to overcome the fear? I'll be specifically answering this question. Just you have to wait for a couple of minutes, Parul. Don't worry. It is all about your rehearsal and homework. If you are well prepared, then you will not fear. Simple mantra, but I'll be telling you one or two lines also how to overcome this fear. Parul, just wait. So tell me, very, very important question, guys. Tell me something about yourself. So in any interview, because you'll be meeting the panel or the company's panel for the first time. जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो सीधा क्वेश्चन पूछना नहीं शुरू हो जाते. सबसे पहले आप उसके बारे में जानना चाहेंगे. So company would be interested, the panel would be, HR would be interested in knowing you, about you. So in this, you already have given your name, your college name, your degree you're doing from this college, your 10th, 12th, everything is you have given in resume, or they have got your credentials with them. But in person, tell me something about yourself. सिर्फ जो रिज्यूमे में लिखा है 4 लाइनें वैसे नहीं बोलना है. जनरली हैव सीन जिन्होंने अपना इंटरव्यू प्रिपेयर नहीं किया होता वो इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं. सर, माय नेम इज सो एंड सो, आई डिड माय 10th फ्रॉम दिस एंड दिस स्कूल, स्कोरिंग these many marks or this percentage, this much percentage, 12th from this and this school, graduation I'm doing from this college. So that's how it goes, and you stop. ये तो 10 सेकंड 15 सेकंड में खत्म हो गई. This you already have given in your resume, or they have got this all these information with them. So what else? So something, tell me something about yourself is very, very important question. Now tell me, very important question. What you want? You want to lead your own interview, or you want that your panel, the company's panel should lead your interview? आप चाहते हैं इंटरव्यू आपके हिसाब से चले या पैनल के हिसाब से चले? किस हिसाब से चलने चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे? You should lead your interview, or panel should lead your interview? Answer me this question. क्या चाहते हैं आप? If panel starts leading your interview, then you're gone in just 30 seconds. So it's better we should be able to lead our own interview. हमसे वही क्वेश्चन पूछे जाएं जिसके बारे में हम कंफर्टेबल हैं, पर मुझे आपकी शक्ल देख के कैसे पता लगेगा कि मैं आपसे क्या पूछूं? So the very first gateway to this opportunity is, yes, we should lead our interview. The very first opportunity is when we are asked this question, tell me something about yourself. Tell me something, or introduce ourselves. Introduce. So in this question, guys, this question can be asked in these ways. Describe yourself, tell me something about yourself, tell me something beyond your resume, etc. So how to answer this question, and why this is called golden opportunity, why this is the best way to lead our interview. Now to prepare an introduction, first of all you need to pick up 3-4 strong areas from your school days and college days. 4 क्वालिटीज ऐसी कौन सी है, 3 से लेकर 4 क्वालिटीज जो आप उनको दिखाना चाहते हैं. यू वांट टू शो देम द एरियाज यू कैन पिक अप फ्रॉम योर एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, प्रोजेक्ट्स, वर्क एक्सपीरियंस. इंटर्नशिप को हम वर्क एक्सपीरियंस बोल सकते हैं इन योर केस. एंड एनीथिंग, 5th point, anything else you want to tell them so that they are able to realize potential in you. Third very important point, guys, whenever any company is coming to your campus, they are pretty clear about the objectives. आपको लगता है प्रेशर, पारुल, या सभी के ऊपर प्रेशर होगा इंटरव्यू का? आपसे ज्यादा प्रेशर उस इंटरव्यू के एचआर के ऊपर होता है, कंपनी के एचआर के ऊपर, जिस पर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पिक अप द राइट कैंडिडेट्स फॉर द जॉब.
अगर उन्होंने राइट कैंडिडेट नहीं पिक किया, दिल बी आंसरेबल टू देयर सुपीरियर्स देयर, जो बॉसेस उनके वहां कंपनी में बैठे उनको आंसर करते हैं, तुम क्या कैंडिडेट उठा के लाए हो सर। आप वो एचआर बोलेगा सर रिज्यूमे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, इसने इंटरव्यू भी थोड़ा सा अच्छा दिया था, बट इफ दे आर नॉट एबल टू जज, दे आर गॉन। सो प्रेशर आपके ऊपर भी है, उतना ही प्रेशर उनके ऊपर भी है, बिकॉज दे विल बी मूविंग टू ऑल कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया। सिर्फ ये नहीं कि आपके कॉलेज में आए हैं, वो और कॉलेज में जाएंगे, एंड वेयर इन विच एवर कॉलेज दे विल फाइंड द पोटेंशियल कैंडिडेट, दे विल पिक द पोटेंशियल कैंडिडेट। सो इट्स वेरी आवर ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो, पहला स्टेप क्या इंटरव्यू की तैयारी करने का, कि कंपनी आपके अंदर क्या देखना चाहती है, वन। सेकेंड, हाउ we can show that we have got potential, we have got qualities which you are searching for. So वो qualities आपको introduction के अंदर show करना होता है when you are asked introduce yourself. And generally introduction को start करने के लिए, for example, we all start with our name, my name is so and so. But if you are asked, okay, Rudraksh, introduce yourself, then please do not start with your name. अगर मैं बोलूँ रुद्राक्ष, introduce yourself, रुद्राक्षी सॉरी, introduce yourself, और if I say दिवम introduce yourself, तो बिल्कुल अपना इंट्रोडक्शन ऐसे मत स्टार्ट करो, from your name, so I am Divam or I am Shikhar Pandey, right? Friend of Chulbul Pandey, ऐसे मत करना इंटरव्यू स्टार्ट। इफ अगर उन्होंने नाम बोल दिया, सो सर आई डिड माय 10th 12th फ्रॉम दिस एरिया, एंड स्टार्ट विद व्हाट यू स्ट्रांगली बिलीव इन। हमेशा इंट्रोडक्शन का स्टार्ट ऐसा होना चाहिए जिसको आप स्ट्रांगली बिलीव करते हो। आई स्ट्रांगली बिलीव इन, फिर यहाँ से स्कूल जर्नी, कॉलेज जर्नी से जो अपने 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स दिखाना चाहते हैं। इन माय स्कूल डेज आई यूज्ड टू बी द कैप्टन ऑफ माय क्रिकेट टीम, आई यूज्ड टू टेक पार्ट इन व्हाटएवर एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर। फिर कॉलेज में आते हैं, कॉलेज से 2-3 चीजें आप पिक कर सकते हैं, अपने इंट्रोडक्शन के अंदर लिख सकते हैं। आई विल बी शोइंग यू दैट हाउ इंट्रोडक्शन इज टू मेड। सो इंट्रोडक्शन कम से कम 1 या 1.5 मिनट का होना चाहिए स्टफ आपके पास बोलने के लिए, क्योंकि मुझे 1-1.5 मिनट का टाइम चाहिए, सो दैट आई कैन पिक अप द थ्रेड्स फ्रॉम देयर एंड फ्रेम क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, इफ यू से व्हाइल इन 3rd ईयर आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क टू हैव प्रोजेक्ट विद जो भी कंपनी XYZ. In that particular company, I was appreciated for my work and I was appreciated by my college head also, department head also. अब मेरे को curiosity हो रही है कि आपने ऐसा क्या कर दिया. So what was my next question would be, so tell me something about your project. What exactly you did and why you were appreciated. तो हो गया ना, एक क्वेश्चन वहां से बन गया। तो इंट्रोडक्शन के अंदर थोड़ा थोड़ा हिंट देते रहते हैं। So for example, in school, I used to participate a lot in debate and speech competition, debating competition, declamation contest. And initially, I was not so confident in public speaking, but after participating in these competitions, I got confidence to speak in public also. And again, I represented my school, my college at state level or district level, इंटर कॉलेज कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन। सो आपसे पूछेंगे कोई ऐसा कंपटीशन बताओ जिसमें यू गॉट द फर्स्ट प्राइज और सेकंड प्राइज, एनी प्राइज दैट यू हैव वन। यस सर, टॉपिक ये था, ऐसा था। तो इंट्रोडक्शन के अंदर 1 to 1.5 minutes stuff should be there, for example, to pick up the threads, so as to pick up the threads from your introduction and frame questions. तो ये पहला स्टेप है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर दिस सेशन, इफ यू हैव ऑलरेडी मेड योर इंट्रोडक्शन इन दिस वे, Dikshant, this is a very unusual question you're asking. If for NMAT, I applied only for Mumbai campus, but now I want to apply for pharma and off campuses. Can I register? Please help. Dikshant, I think this you should ask from your placement officers or coordinators, mentors or seniors. I haven't understood your question, that you are already doing this engineering from somewhere, or you're an NMAT student, or what exactly is your question, I think. So this is the first step, guys. So tell me something. हम क्यों पूछते हैं? Why do we want to ask your introduction? Why we are interested in your introduction? Because the very first commonsensical answer to this question is that because we are meeting you for the first time. आपसे पहली बार मिल रहे हैं, तो हमें आपके बारे में कुछ नहीं पता. It is your moral responsibility, I would say, to, or constitutional responsibility to tell us something about yourself. Why? क्यों करते हैं? These are the various reasons that we want to ask your introduction. It is kind of ice breaking. आप कंफर्टेबल फील कराने के लिए आपको फर्स्ट इंप्रेशन, यू क्रिएट योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द पैनल द वे यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ.
हमारे को 30 सेकेंड्स लगते हैं इन मॉक इंटरव्यूज ऑल्सो, इन कंपनीज इंटरव्यूज ऑल्सो दे विल असेस योर मैच्योरिटी लेवल इन फर्स्ट 30 सेकेंड्स। अगर हमें पहले 1 मिनट में पता लग गया कि कैंडिडेट के अंदर दम है, पोटेंशियल है, विल स्टार्ट आस्किंग फर्दर क्वेश्चंस। सो फर्स्ट इंप्रेशन, with the help of this question, we come to know about your communication abilities. Communication is not restricted to speaking English. How well you present yourself is communication. How well you have structured your introduction, कि आपने क्या बोला, किस सीक्वेंस में बोला, will show your priorities and maturity level. How well you think, how well you prioritize, कि आपने क्या क्या बोला, 4 क्वालिटीज अपने बारे में बताई तो आप उनको इंपॉर्टेंस देते हो लाइफ के अंदर. How they have shaped your personality. What do you find important to share? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरव्यू में क्या शेयर करते हो उनके साथ इंट्रोडक्शन के अंदर. अब आप बोलो सर मुझे राजमा चावल बड़े अच्छे बनाने आते हैं. What राजमा चावल has to do with the profile they are offering? It shows your level of maturity also, and how the different events, let it be participating or project work or internship or your NGO's activity, volunteer activities, how everything has shaped your personality. Key learnings, आपने उनसे क्या सीखा. Your EQ, emotional quotient. Emotional is not restricted to रोना धोना. आपको अपनी कॉलेज में जो मिला वो IQ के दम पे मिला, and you will be taken in because of your IQ. आप बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कॉलेज से डिग्री अच्छा किया नंबर से, डेफिनेटली अच्छा इंप्रेशन आएगा, बट यू विल बी एबल टू ग्रो ओनली इन योर प्रोफेशनल लाइफ इफ यू हैव गॉट ग्रेट IQ. IQ के अंदर yes, Akash, you can speak Hindi with English. It should be English with Hindi, not primarily Hindi and then English. But make sure that, because Akash and to rest of you, इतना English से डरने की जरूरत नहीं है. Primarily, we all can speak couple of lines. Let it be introduce yourself, why you want to go for this profile, what are your strengths and weaknesses. All these typical question anyone can answer with little practice. The point is rehearsal. रिहर्स करो, चीजों को लिखो, रिहर्स करो, टेक मॉक इंटरव्यूज, रिकॉर्ड योर इंटरव्यूज, गिव योरसेल्फ अ थॉरो पॉजिटिव फीडबैक और कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक. अपना इंटरव्यू, रिकॉर्डेड इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू सीनियर्स को दिखाओ, प्लेसमेंट टीचर को दिखाओ, कोऑर्डिनेटर को दिखाओ, अपने मेंटोर को दिखाओ, एंड टेक द फीडबैक एंड कीप वर्किंग ऑन योर वीकनेसेस. इमीडिएटली इन इंटरव्यू से एक दिन पहले आपको याद आ रहा है कि हमारा इंटरव्यू हमें कुछ करना है, तो गड़बड़ हो जाएगा, सो पैनिक में आ जाओगे. डोंट वरी अबाउट योर इंग्लिश स्किल्स और स्पोकन स्किल्स. So, हम हर कोई हैंडल कर सकता है आकाश, so nothing to worry about. We want to check potential, and potential has nothing to do with the language. Language तो हम फिर भी सिखा सकते हैं, but आपने 4 साल इंजीनियरिंग में कुछ किया ही नहीं, सीखा ही नहीं, आपको कुछ आता नहीं, that would be very difficult for us. So don't worry आकाश, everything would be fine. And ultimately clarity of thought. इतनी सारी चीजें, और आपका इंटरव्यू अगले 10-15 मिनट कैसा चलेगा वो आपके इंट्रोडक्शन के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है. आपने अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिया एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, यू विल फील कॉन्फिडेंट एंड यू विल टू सेल थ्रू दिस एक्सरसाइज स्मूथली. आप इंट्रोडक्शन में ही गड़बड़ा गए, सो बाकी 15 मिनट आपका बहुत ही पैनिक गुजरेगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल द डिफरेंट क्वेश्चन, इवन इजी क्वेश्चंस. Okay, Parul, but Parul, don't worry about below 7 CGP or etc. Engineering के अंदर we study 16 to 20 different subjects, और जिस जॉब के लिए ऑफर आ रहा है उस जॉब में वो 16 के 16 सब्जेक्ट यूज नहीं होने वाले. First of all, keep this particular commonsensical thought in your mind, all of you, that we will not be utilizing all the subjects there. जो प्रोफाइल आपको ऑफर होगा उसमें 1-2 सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस होगी, 1-2 फंडामेंटल्स की इंपॉर्टेंस होगी. वन. सेकंड, इफ वी फाइंड द कैंडिडेट इज वेरी पोटेंशियल, हिज और हर IQ, EQ, स्पोकन, कॉन्फिडेंस, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, एक्स्ट्रा, एवरीथिंग इज फाइन. टेक्निकल ट्रेनिंग, बिलीव मी, हर एक कंपनी का मॉड्यूल होता है. व्हेनेवर यू आर इंडक्टेड, यू आर टेकन इन, यू विल बी गिवन ट्रेनिंग आल्सो. पहले दिन थोड़ा ना, जॉब के नेक्स्ट डे तुम ऑफिस में जाओगे और आपको एक प्रोजेक्ट दे देंगे, ये एक रॉकेट है, इस रॉकेट का इंजन बनाना है और ये रॉकेट 2 घंटे के अंदर मून या मार्स पे चला जाना चाहिए, बिकॉज वी आर कंपीटिंग विद एलॉन मस्क. हम एलॉन मस्क के राइवल है, कंपटीटर है. ये प्रोजेक्ट आपकी जिम्मेवारी है और ये रॉकेट ऐसा बनाओ जो कम से कम 10 बार हम यूज कर सकते. ऐसा कुछ नहीं होता. विल ट्रेन यू, दे ट्रेन यू on the for the required job or profile, so don't worry. हाँ, इसको हम आंसर कैसे करते हैं when हमारी CGP लो होती है. CGP लो का मतलब होता है either you were not serious in studies, or second positive aspect, you devoted your time to other areas also. तो उन्हें बोलो कि हम दूसरे एरियाज में
ज्यादा टाइम डिवोट किया. सो पूरे 16-20 पेपर्स में से कुछ पेपर्स पक्का सभी के ऐसे होते हैं जिसमें हम अच्छा स्कोर करते हैं. सो आई वाज प्रीटी इंटरेस्टेड इन दीज पेपर्स, दीज सब्जेक्ट्स. सो आई स्कोर्ड वेल. अप टू 8 CGP मैंने वहां पे स्कोर किया, 80% स्कोर की है. बट कपल ऑफ सब्जेक्ट्स आई वाज नॉट एबल टू डेवलप माय इंटरेस्ट. वन. सेकेंडली, आई वाज वेरी एक्टिव इन एक्स्ट्रा करिकुलर और करिकुलर एक्टिविटीज. आप कॉलेज के डिफरेंट क्लब्स होते हैं, उसमें होते हैं. सो यू नीड टू शो देम कि अगर आप थोड़ा पढ़ाई कम करके दूसरे एरियाज में पार्टिसिपेट करके अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव किया. पारुल, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन एंड टू ऑल ऑफ यू? So don't worry, don't go with this mindset कि आपका CGP कम है. जब आपका CGP कम है, हमने तब भी आपको बुला लिया. That means we are not so bothered about your CGP. Believe me. हमने बहुत बार देखा है जो अच्छे CGP वाले, they are not able to perform well during the interview. Those who have got average CGP 7, 6.5, वो बहुत अच्छा perform कर रहे होते हैं. So it is all about confidence. Once you have been shortlisted, so उसका CGP का तो इतना रोल रह नहीं गया. Once you are shortlisted for the interview, then it is up to you to present the qualities in you. तो इसलिए हम लोग सारी तैयारी कर रहे हैं. So yeah, in Parul, have I answered your question? Yes or no? So tell me something about your yourself. What should we include? What should we include? So it's all about confidence, guys. In personal information, we want your name, place, family, a little education, key learning skills learned during college days, school days, achievements, academic or non-academic achievements, interesting facts about you, which will reveal more about your personality. Personality is not your outward appearance. Personality is your thought process. Any other significant achievement you want to share outside your college, even your strengths, key skills, personality may hobbies and extracurricular we include, and career goal. In every introduction, the last couple of lines, we should tell that why you want, what is your career objective and why you want to go for this job, this profile. The simple answer is that इसके अलावा बहुत सारी चीजें और ऐड कर सकते हैं, but simple tip is that your educational background and whatever learnings you had during school days and college days is vying for vouching for this profile. इस प्रोफाइल में मैं इसलिए आना चाहता हूँ जो मैंने कॉलेज में सीखा है, स्कूल में मैंने बहुत कुछ सीखा है. आई थिंक दैट आई विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द कंपनी यूजिंग द लर्निंग्स व्हिच आई हैड ड्यूरिंग स्कूल डेज एंड कॉलेज डेज. ठीक है ना? मैं आपको यहाँ पे बॉलीवुड के, मुंबई के एक्टर बनाने के लिए इंटरव्यू लेनी नहीं, एक्टर एक्ट्रेस को पिक करना है. आई एम मेकिंग सम मूवी एंड आई एम सर्चिंग फॉर लीड एक्टर एंड एक्ट्रेस, कुछ नहीं. तो आपकी जो नॉलेज है, जो इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन है, व्हाटएवर डिसिप्लिन यू हैव स्टडीड, तो उसके बेस पे तो आपको नौकरी मिल रहा है. तो आपको फर्स्ट जॉब जो होता है, नाउ लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू, the very first job is Pratiksha, this you have to first of all find out that what profile they are offering you. हर एक प्रोफाइल के अंदर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं चलता. If for every profile we need academic inputs also, be it any profile, चाहे management हो, technical, any job you talk about, we need technical knowledge also, we need non-technical knowledge also, stuff also, qualities like team player, ability to handle stress, good communication, initiative taker, energy, focus, discipline, sincerity, respecting deadlines. There are a number of things that we want in the candidate. It's not about CGP only and your technical stuff. Technical stuff तो हम आपको सिखा सकते हैं for that particular job. But if you're not sincere, if you're not committed, if you're not hardworking by nature, you're lazy by nature, you're procrastinator, ये सारी चीजें कंपनी की responsibility नहीं है आपको सिखाना. For this, you had 12 years of school life and 4 years of your college life. अब 16 साल के अंदर जो बच्चा लेजी है, फोकस नहीं है, काम से भागता है, झूठ बोलता है, ये करता है, तो हम उसको नहीं सिखा सकते. So nothing to worry about, Jay. In this case, Sonu, first of all, पुअर एकेडमी की कोई डेफिनेशन नहीं होती. पुअर एकेडमी की कोई डेफिनेशन नहीं होती. सो आप जब आपको लगता है पुअर एकेडमिक है, so आप whenever you see that you've got not so called decent academics, so आप admit कर सकते हैं during the interview that you were average student, but उसके साथ साथ बोलो, but throughout my school life and college life I found couple of subjects very interesting.
तो कम से कम उस सब्जेक्ट्स में हमने बहुत अच्छा किया होता है। करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपने नहीं करी, बट वी कैन नॉट अंडू नाउ। अब आप वापस एक फर्स्ट ईयर में नहीं जा सकते सो एज टू टेक पार्ट इन ऑल द एक्टिविटीज, बट व्हाटएवर टाइम इज लेफ्ट, so make sure that you participate or you do some project works, internship, etc. अभी आप कर सकते हैं। So Sonu, and to rest of you जिनका CGP थोड़ा कम होता है, pick up the subjects in which you scored better than other subjects. तो उस सब्जेक्ट्स के अच्छी तरह से पढ़ लो एंड प्रिपेयर इनसाइड आउट ऑफ दैट सब्जेक्ट फंडामेंटल्स की इन एरियाज में इंटरेस्ट रहा, और उन सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लाइफ में कहाँ पे है, कंपनीज में कहाँ पे है, कॉर्पोरेट सेक्टर में कहाँ पे है, प्रोडक्शन सेक्टर में कहाँ पे, वेयर डू वी यूज द नॉलेज। सो उसके बारे में आप बोलो तो हमें इतना लगेगा ठीक है यार, जो इसको इंटरेस्ट होता है इस कैंडिडेट को उस इंटरेस्ट के बारे में अच्छी तरह से जानने की कोशिश करता है, रादर देन नोइंग एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। ये ऐसा नहीं है तो चलेगा। सो सोनू डोंट वरी। नो अजिंक्य, हायर स्टडीज के बारे में आफ्टर इंजीनियरिंग दैट यू वांट टू गो फॉर एमबीए और समथिंग, नो नो नो। वो बोलेंगे कि आप सैलरी तो हमारी लोगे, तैयारी एमबीए की करोगे या एमएस की करोगे, नो। एट द टाइम ऑफ दिस इंटरव्यू और जॉब अभी हायर स्टडीज का उन्हें नहीं बोलना। गुड दर्शन, इफ यू हैव गॉट दीज मेनी स्किल्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब मुझे ये बताओ कि यू आर प्रिपेयरिंग योर हेयर फॉर एमबीए इंटरव्यू और द कंपनीज इंटरव्यू, प्लेसमेंट जो कॉलेज ऑफर करता है वो वाले इंटरव्यू के लिए। इफ यू हैव गॉट दिस, तो ये एडिशनल इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं दैट in addition to studying engineering subjects, during my course preparation I got interested in financial management, a little bit marketing. I was part of marketing coordinating committee, so I learned about I got interested and I learned a lot about marketing also, and people engineering skill also. Yes, you can Darshan, you can mention this in your introduction if we ask that what else you want to share. So Prashant, first of all, this is not your responsibility. You should not be bothered about. I have seen Infosys coming to colleges and picking up only mechanical guys. वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप उन्हें प्रूव करो सिंस यू आर फ्रॉम द मैकेनिकल बैकग्राउंड एंड यू आर वेंचरिंग इनटू आईटी। वो आईटी वालों ने आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया, तो दिस इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रोल सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट में नहीं है, बट आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अगर कोई आप मशीन प्रोग्राम बनाते हो, वट एवर प्रोग्राम यू डेवलप टू रन एनी ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ऑपरेशन के लिए कोई मशीन के लिए कोई प्रोग्राम बना रहे हो, एंड यूर फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, यू ऑलरेडी नो द वर्किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन और द मशीन सेटअप, ऑपरेशन सेटअप, सो यू विल बी इन बेटर पोजीशन टू मेक दैट सॉफ्टवेयर। सो वो जस्टिफिकेशन हो जाता है। So आप मैकेनिकल के हैं and you're from electrical or electronics background, you have picked up by some IT concern, so they are confident to train you on that. They just want to check if you're from non-IT background, क्या आप में नया चीजें सीखने का इच्छा है या नहीं है। If they find that you're a keen learner, adaptable learner, so आप you're selected. तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डू नॉट बी सो बॉदर्ड अबाउट दैट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ दैट बीइंग फ्रॉम अ मैकेनिकल बैकग्राउंड एंड आई एम गोइंग फॉर दिस जॉब। नो, एवरी 3 इयर्स तो इंजीनियरिंग के सबके कॉमन होते हैं। आउट ऑफ 20 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट 6 to 7 सब्जेक्ट्स आर कॉमन। साइंटिफिक टेम्परामेंट चाहिए होता है हमें टू अंडरटेक एनी रिस्पांसिबिलिटी, टू एग्जीक्यूट एनी रिस्पांसिबिलिटी। दैट हैज साइंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग हैज टॉट मी। मैकेनिकल इंजीनियर्स तो बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन होता है। वी कैन जस्टिफाई, वी कैन कोरिलेट विद एवरीथिंग। Non-core domain. So have I answered your questions? So guys, jaldi se aage chalte hain. So tell me something about yourself. It should be well structured, it should be brief, not more than 1 to 1.5 minutes stuff. It should be coherent. आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं, and we should sell our strong areas, because 15 minutes में it's we have got only 15 minutes to show that the qualities which you are looking for in any candidate, I have got all those qualities. So we need to sell our strong areas. They're interested in our potential qualities, positive qualities, rather than our weaknesses. So one commonsensical, that please do not highlight your weaknesses when you introduce.
Sudhanshu, then you can probably tell that you're interested in this language, you know programming a little, you have tried your hand on this programming, Java programming, but you do not have in-depth knowledge of Java programming, but you are still working on this Java. Whenever you get the opportunity, you read the books, you read the programs, you try to make programs. तो वो अगर आप जावा के मास्टर प्रोग्रामर हो तो बिल गेट्स आपको पिक कर लेगा, फिर आपको ये कंपनी क्यों पिक करेगी? जावा के बारे में do not know in depth, you do not have in depth knowledge of Java, but yeah, I am interested in Java programming, so I have tried couple of small modules using JavaScript, but I do not have in depth knowledge, so कोई इससे फर्क नहीं पड़ता. At least you know that you have got this much knowledge और आपको इससे ज्यादा नहीं पता है. तो सुधांशु ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है. अगर कोई सिंपल क्वेश्चन होगा जावा का तो डेफिनेटली यू आंसर द क्वेश्चन, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, सो सर आई थिंक दिस इज लाइंग आउटसाइड माय नॉलेज एरिया, सो आई विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. So do not waste your time also and their time also, and do not get into any so-called panic mode. Do not lose your confidence during the interview. Actually जब हम सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछते हैं, there are 3 levels. First the fundamental level, आपको जावा का फंडामेंटल पता है या किसी भी सब्जेक्ट का फंडामेंटल पता है तो फाइन. Then we move on to second level, that is called compound or moderate level. There we will ask question about a subject having moderate level of difficulty. यहाँ तक भी 50% लोग आंसर कर पाते हैं, but when we find that ये कैंडिडेट का आंसर्स पोटेंशियल इसका 9.8 CGP है और प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत सारी बातें इसने लिखी हैं, तो let us check his ability to answer in-depth question on that particular subject. तब हम पूछते हैं in-depth question. अगर मुझे पता है कि आपका स्कोर थोड़ा सा कम है, आपने बोल ही दिया कि मुझे जावा का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो I'll ask only fundamental questions. So make sure Sudhanshu and to rest of you should revise your fundamentals. Yes, you should have all the certification proof of achievement we speak about. Yes, वो पार्टिसिपेशन वाला जो है फंडा नहीं चलता, वो सिर्फ इंटरव्यू में बोलने में चलेगा. यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट, और वो अचीवमेंट्स में नहीं हम शो कर सकते. पार्टिसिपेशन इज नॉट अचीवमेंट. सो गाइस 3 stages are there. Sudhanshu, have I answered your question? Mr. Singla. So pre-interview preparation, during interview and post-interview. So pre-interview preparation. So gathering information about the college or the company. In your case, it would be company required documentation, prepare a good CVs, do your SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, threats you should be aware of, applicable dress code, and please familiarize yourself with frequently asked questions. Please rehearse करो. Normal question का आंसर सभी को देना आना चाहिए. That's called pre-interview preparation. Gather the information about the company you are applying for. SWOT analysis would be effective only if you answer all the questions honestly. कि आपकी strength क्या है, weaknesses क्या है. Take the help of your seniors, mentors, teachers. Reflect on your strengths and weaknesses. Take action to remove your weaknesses and to consolidate your strengths. Check periodically. आपने अपने आप को टारगेट दिया 15 दिन का that you want to remove this weakness. क्या कुछ progress हुआ नहीं हुआ? So check periodically. Take feedback and work on the feedback. How to answer? This is a very simple technique to answer questions in the interview. ABC technique बोलते हैं इसे. Now what is A plus B plus C technique? Parul, if that particular course is related to the profile or your interest areas, या उसने उस course को ने आपको कुछ learning दी है, कुछ benefit दी है, relevant है, then it's better to highlight. Otherwise, if it is not at all relevant to the profile offered by the company or job you're applying for, then वो उस course का कोई फायदा नहीं होने वाला. If it is relevant, if you have learned a lot, तो फायदा है. कोर्स से लर्निंग, पढ़ाई से लर्निंग क्या हुआ तो एजुकेशन की वैल्यू होती है. अदरवाइज यू विल फाइंड मेनी क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड पीपल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, बट बहुत ही कम लोग एजुकेटेड होते हैं. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत कम लोगों को समझ आती है. क्रैम करके हर कोई नंबर ले लेता है. पारुल, सो डोंट वरी. A plus B plus C टेक्निक होता क्या है? सो A मींस एक्नॉलेज, B इज ब्रिज एंड C इज कंट्रीब्यूट. सो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, when you are asked question, you respond and acknowledge the question. For example, tell me something about this Oracle or Finacle software or machine learning or artificial intelligence. You respond, okay sir, artificial intelligence is very very important area. Acknowledge the question, artificial intelligence, or you respond by acknowledging the question, okay sir, my view on artificial intelligence. मतलब ये आपने क्वेश्चन को एक्नॉलेज कर लिया कि ये अंडरस्टूड द क्वेश्चन, एंड देन ब्रिज वन ऑफ योर की मैसेजेस. अब आप माइंड में सोच रहे हैं कि मुझे क्या बोलना है.
After you are done with your homework in your mind, then start with your answer. So bridging सबसे important technique होता है when answering the question. For example, जैसे आपसे बोला गया, कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया, तो उसका एक्नॉलेज हम कैसे करें? दैट माइट वेल बी द केस इन दैट सिचुएशन. फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये सॉफ्टवेयर वहां लगता है, वहां नहीं लगता, ये मशीन में, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दिस कंपोनेंट इज यूज्ड देयर, बट इसकी जगह हम ये यूज करें तो क्या होगा? सो आप ऐसा बोल सकते, दैट माइट वेल बी द केस इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, बट the situation which you have highlighted is altogether different from the one we have today in today's technological world. अब key message आपका आंसर होता है, or you can say I cannot comment on that specifically, but as far as I know about that programming or that particular component or that particular principle, ये आपका हो गया. But let's not forget that फिर आपकी कंडीशन आती है, आप इसमें ब्रिज का वो टाइम होता है जिसमें हम सोचते हैं हमारा आंसर क्या है. की मैसेज इज आवर आंसर. सेम फॉर एग्जांपल थर्ड सिचुएशन दैट मे बी द केस इन अनदर इवेंट, ये हम कहीं और तो यूज कर सकते हैं, बट हाउएवर आई शुड से दैट व्हाइल डूइंग प्रोजेक्ट आई केम अक्रॉस विद दिस वेरी सिचुएशन जहां पे ये जो प्रिंसिपल था ये फेल हो गया, देन वी डिवाइज न्यू मेथड, न्यू इनोवेटिव मेथड टू सॉल्व दैट प्रोसेस, तो आपका आंसर भी आ गया. सो दैट्स कॉल्ड A plus B plus C plus A plus B plus C technique to answer the question. अगर आप ऐसे चलते हैं, it shows your maturity and your homework. Dress code, pure formal. So I'll not be focusing too much on dress code. It has to be whether male or female candidate, it has to be formal. क्यों होना चाहिए? Because your dressing sense will reflect your professionalism, level of sophistication, your intelligence and your credibility also. For example, आपको क्या लगता है boys, अगर आप इंटरव्यू में ऐसा कोट पहन के चले जाएंगे, सूट लेंथ पहन के चले जाएंगे, do you think that you'll give good impression? I think no. So जो हमारा जो ड्रेसिंग सेंस होता है should be as per line of the work, means इंटरव्यू में प्योर फॉर्मल, सीरियसनेस शो होता है. योर कॉर्पोरेट कल्चर, कंपनीज कल्चर एंड योर ऑडियंस, किसके सामने आप बैठे हो, अपने दोस्तों के साथ पार्टी में हो, एचआर कंपनी के सामने बैठे हो, प्रिंसिपल के सामने हो, सो ड्रेसिंग सेंस एज पर योर ऑडियंस होना चाहिए. सो ऑडियंस इज एचआर कंपनीज पैनल, सो उसके सामने इट हैज टू बी प्योर फॉर्मल. पार्टी पिकनिक नहीं है वेयर यू कैन गो इन शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स. सो पर आपकी जो क्लोथिंग और ग्रूमिंग होनी शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट, नो डिस्ट्रैक्शन. Appropriate appearance, guys. जैसे boys shirt should be light shirt, tie up to you to wear, trouser dark होना चाहिए, no doubt. Online interview, your face would be visible, but again dress properly during online interview also. Sometimes वो बोलते हैं ना कि just stand up and say something, तो आपका ड्रेस नजर आ जाएगा. And shirt light, trouser dark, suit length the most appropriate, I would say. This is called V and T effect. Wearing suit अगर आप ऐसे रखते हैं तो ये V effect बनता है, and this is called T effect. तो जो ऐसे ड्रेसिंग सेंस में जाते हैं, so we focus on, our focus would be on speaker. अगर आप ये ड्रेस पहन के कुछ बोलते हैं तो सभी लोग आपको गौर करते हैं. टाई कंपल्सरी तो नहीं है, but if you wear tie, so you feel confident. If you're not able to carry well in the tie, then fine. But it has to be formal shirt and formal trouser, no jeans. नो टी शर्ट, नॉट मैंडेटरी, बट अगर आप पहने और उसको कैरी कर सकते हैं, यू फील कॉन्फिडेंट. थोड़ा पहले से ट्राई करके देखो ना. डू नॉट बाय द टाई ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू. 11 बजे इंटरव्यू है तो आपने 9 बजे ट्राई करने, टाई को ट्राई करने का सोचा, सो अभी से ट्राई करके देख लो एक दो बार. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन टाई नॉट मैंडेटरी. सो गर्ल्स के लिए, सो प्लेन शर्ट और स्ट्राइप शर्ट गर्ल्स, ट्राउजर शुड बी डार्क. ये कुछ फॉर्मल ड्रेसिंग्स हैं. वेस्टर्न हो सकता है, इंडियन वेस्ट फॉर्मल हो सकता है. सो एसेसरीज, डू नॉट अप्लाई टू मच मेकअप, आईज, लैशेस, ब्लशेस एक्सेट्रा, कुछ फालतू नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू. ये ऑफलाइन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पेशेंटली वेट फॉर योर टर्न, डू नॉट शो एनी साइंस ऑफ नर्वसनेस. वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स. बिफोर एनी टेस्टिंग टाइम वी ऑल फील Pradha Surahadi, your question, MSc in other countries. So it should revolve around, just I will be answering your question, Pradha Saradhi. So it is MSc, you are going for MSc in any particular subject. So you need to highlight your passion for that subject. Everything revolves around when you are going for academic courses further. अगर आप academic पढ़ने जा रहे हैं, so आप का interest होना चाहिए. You should be very passionate about that subject.
और उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, इन व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू विल बी ऑफर्ड आफ्टर डूइंग दैट एमएससी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंट्री, और उस कंट्री की यूनिवर्सिटी की क्वालिटी की, वहाँ की एमएससी जो है अच्छी तरह जानी जाती है, नेटवर्किंग अच्छी है, वहाँ के कुछ कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स पास आउट हैं वो लोग क्या कर रहे हैं. You need to show your passion and the importance to the college. In this way, you'll be able to impress them outside. No, entry exit तो online का कुछ नहीं था. Online में again we have to say thank you for giving me this opportunity to for this interview and sharing my views on different topics and बस थैंक यू बोलते हैं हमें. वहां पे एंट्री एग्जिट प्रोटोकॉल जो होता है इट्स ओनली फॉर ऑफलाइन स्पेसिफिकली ऑन द स्क्रीन, बट ऑनलाइन में क्या, यू ओपन द स्क्रीन, योर फेस वुड बी विजिबल आफ्टर यू डन विद योर इंटरव्यू. एज सून एज दे विल बी saying that nice talking to you Mr. so and so or Miss so and so, so say thank you, show your gratitude that you have been given this opportunity by the college and the company to be at this interview. Only show thankfulness for giving you this opportunity. Ajinkya Rahane, our captain. Establishing rapport. So good rapport कैसे बनता है? As soon as let it be online, offline interview. So it should be confident, cheerful greeting. Always wear little smile in our face. Do not wear the drop or serious outlook on your faces. I've seen 80% of the student during interview they wear drop dead serious outlook. बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे उनके साथ हादसा हुआ है कभी. अभी भी कुछ हादसा होके हटा है. सो यू आर जस्ट 2021, बी एनर्जेटिक, बी कॉन्फिडेंट, बी स्माइलिंग, रेडियंट होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए आपके फेस के ऊपर. मेंटेन आई कांटेक्ट. आई कांटेक्ट ऑनलाइन में कैसे मेंटेन करते हैं? लुक इनटू द वेबकैम. यू विल बी मेंटेनिंग आई कांटेक्ट विद द पैनल. During interview, please use examples in your answer. Ensure that interview has understood whatever you're trying to say. Interview को आपकी बात समझ आ गई, आपकी बात इंटरव्यू की बात, इंटरव्यूअर की बात, पैनल की बात आपको समझ आ गई और आपकी बात पैनल को समझ आ गई. It's vice versa. Right now, if you have got, let me check. Yes, I have got, I think one, but resume, we have got specific session on resume. Right now, I'll not be having resume, but in case if I'm able to, I'll show you. Sachpreet. Entering the room offline, knock the door, take permission. Even before you sit and take your seat, say thank you. So post interview होता है जब आपका इंटरव्यू खराब हो जाता है. So reconstruct the entire interview, identify the positives and negatives, look into negatives and identify the causes. List out the improvement areas. Seek help for correction from your seniors, mentors, teachers, and practice for the improvement. Post interview, I'm assuming that we should be looking at post interview step. So make sure that first interview and you smash. इसके लिए होमवर्क बहुत अच्छा है. No, CV में if they ask then photo, resume में तो photo 99% companies they are not interested in your photographs. अब मैं आपको इंटरव्यू का एक और important essence बताता हूँ. In any interview from now onwards, आपका कॉलेज के बाद जो आपका प्रोफेशनल लाइफ शुरू होना है, we are not interested in who you are. We are least bothered about who you are. We are only interested in what you are. आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज है, आपके अंदर पोटेंशियल क्या है. We are interested in what in you, not in who you are. काफी लोगों को एटीट्यूड होता है कि who they are. कॉलेज में रिप्रेजेंटेटिव थे, हेड सब कुछ थे, फाइन, वो आपका पोटेंशियल शो कर रहा है. आप नहीं होते तो कोई और होता. So we are least bothered about who you are. तुम कौन हो. We are interested in what you have in you. And interview के अंदर the only parameter is that how to show that what we have in us. पूरा जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं, उन्हें कैसे दिखाया जाए कि हमारे अंदर वो है जो आप ढूंढ रहे हैं. That's the only essence of any interview. How to lead in your interview, identify your strengths, sell your strengths, not your weaknesses. Biggest opportunity मैंने आपको पहले बता दिया, will come to you when you are asked introduce yourself. So सचप्रीत फोटो अगर आपको लगाना है so वो पासपोर्ट साइज की फोटो होता है, सीवी में लगता है, रिज्यूमे में नहीं लगता. CV is actually meant for academic purposes, but resume जो होता है जॉब के लिए होता है. Should we bluff our ways out? क्या हम इंटरव्यू में झूठ बोलें? बिल्कुल भी नहीं. Within couple of seconds you'll be caught. They are very learned people. आप क्या सोचते हो आप बहुत स्मार्ट हो? नहीं, वो आपकी स्मार्टनेस 2 मिनट में पकड़ लेंगे. Please stay to the correct factual figures stuff. What kind of body language? It should be positive, full of energy. At the age of 2021, you should not look lazy, lethargic. What should be our pace of interview? हम किस स्पीड से बोले? Normal.
What if we are not able to answer couple of questions asked in succession? हो सकता है, very much possibilities there. Question number 1 I was not able to answer, question number 2 I was not able to answer, question number 3 I was not able to answer, but question number 4 में मैंने सुना वो भी मुझे अच्छी तरह से आता नहीं है. But please do not lose your confidence. See again that sir, I'm not able to recall the complete answer to this question. I'm able to recall partial answer. मुझे थोड़ा सा आंसर इसका आता है. If you allow, I can share. Seek their permission. You all are human beings and we assume that you're not aware of everything under the sun. आपको दुनिया की सारी चीजों के बारे में नहीं पता, but at least you should be able to answer a couple of fundamental questions. Group interviews आपके लिए नहीं है. Do we have to ask the question at the interview? No, normally no. What if it all goes wrong? So अगर सारा कुछ गलत हो जाता है तो बॉयज का तो एक सिंपल सा मेथड होता है. They'll go to nearest C2H5OH shop and they'll buy a couple of C2H5 bottles. ऐसा बिल्कुल नहीं करना. Sit calmly, think about your negatives, where things went wrong, क्या गलत हुआ, किस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, and prepare your answers well. Day of the time mention impact करते हैं chances of selection rejection? No. You will be selected or rejected as per your answers. How should we handle stress interview? First of all, stress interview के बारे में बता देता हूँ आपको क्या होता है. See, whenever we find the potential in the candidate, whenever we find potential in the candidate, then we go for the stress interview. अगर हमें लगता है कैंडिडेट में कोई दम नहीं है, नॉर्मल से कैंडिडेट है, उसका स्ट्रेस इंटरव्यू नहीं लेते. अगर आपका स्ट्रेस इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, अगर आपका इंटरव्यू 10 मिनट से ज्यादा चल गया, कंसिडर योरसेल्फ लकी. अगर आपका इंटरव्यू 2-3 मिनट चला, 1-2 मिनट चला, हमने आपसे पूछा कि आलिया भट्ट की लेटेस्ट पिक्चर कौन सी है, रणवीर सिंह ने कौन सी पिक्चर में एक्ट किया दीपिका के साथ, ये 2-4 क्वेश्चन पूछे, व्हाट अबाउट योर ब्रदर, व्हाट अबाउट योर फैमिली, थोड़ा 2-4 क्वेश्चन पूछे और आपको भेज दिया, दैट मीन्स हमें आपके अंदर कुछ नजर नहीं आया. खुश मत होना अगर 1-2 मिनट का इंटरव्यू हुआ, और डिप्रेस्ड भी मत होना, गॉड को कर्स भी मत करना, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, अगर आपका इंटरव्यू ज्यादा चल रहा है. अगर इंटरव्यू ज्यादा चल रहा है तभी चलता है व्हेन वी फाइंड पोटेंशियल इन द कैंडिडेट. सो कंसीडर योरसेल्फ लकी. स्ट्रेस हम डालते कैसे हैं समटाइम्स, एंड स्ट्रेस उन्हीं का डलता है जिनके ऊपर हमें पोटेंशियल होता है. जिसके अंदर कोई दम नहीं है तो उसको स्ट्रेस नहीं दिया जाता. हो सकता है ना उसका हार्ट अटैक हो जाए, 5 ग्लूकोज लग जाए उसको इनके दौरान, तो हम क्या बोलेंगे उसके पेरेंट्स को कि हमने इससे क्वेश्चन पूछा, बेहोश हो गया बंदा. तो स्ट्रेस उन्हीं का दिया जाता है जो उसके काबिल है. So how we put stress, how we induce stress during the interview? We'll bombard you with meaningless question. We'll cut your answers. आपके आंसर को काटेंगे. We'll express doubts on your integrity. As soon as you enter, you open the screen online. मैं बोलूँगा, looking at your face on the screen, you look completely dishonest guy. Prove to us that you are honest. अब आपको लगेगा यार मैं तो इंटरव्यू की तैयारी करके आया, मैंने तो सेशन भी लगाया था बुलसाई का, तो उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं था, इनको कैसे मेरी शक्ल पे डिसऑनेस्टी, बेईमानी नजर आ रही है. और आप सच्ची में बेईमान हुए तो आपको लगेगा यार इसे कैसे पता है कि मैं बेईमान हूं. सो प्लीज डू नॉट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस. ये सब तरीके होते हैं हमारे स्ट्रेस के डालने के. विल एक्यूज यू ऑफ ब्लफिंग, तुम झूठ बोल रहे हो. विल लाफ और मॉक एट यू, shouts at you, look uninterested. मैं आपसे क्वेश्चन पूछा, आपसे क्वेश्चन पूछ के मैं स्क्रीन से ही हट गया, आपको लग रहा है मैं आंसर किसको दे रहा हूँ. You'll come under stress. Once we find the candidates under stress, then we start asking very simple question, and most of the candidates they falter on very silly question, normal question also. जब स्ट्रेस में कैंडिडेट होते हैं, हम उससे जब पूछते हैं टेल मी द नेम ऑफ योर फादर, सर नरेंद्र मोदी, उसे लगता है शायद मैंने पीएम पूछ लिया. सो स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है, क्या करें और क्या ना करें, वेरी इंपॉर्टेंट. सो सर्टेन डूज, क्या करना है आपको स्ट्रेस इंटरव्यू हैंडल. कीप योर कूल, एक्सुड, शो कॉन्फिडेंस विद योर बॉडी जेस्चर्स. सीधे बैठे रहो, ऐसे नहीं डर के मारे ऐसे हो गए. आंसर्स, बॉडी जेस्चर्स एंड आंसर थ्रू योर आंसर्स. कन्विक्शन पूरा रहना चाहिए. डू नॉट मम्बल स्टैमर. इन क्रॉस फायर, जब 2-3 क्वेश्चन इकट्ठा पूछे जाए, ट्राई टू आंसर 1 क्वेश्चन एट ए टाइम. After you are finished done with your first answer to the first question, then go to the second member. Sir, what was your question? Ma'am, what was your question? After you're done with the second answer to the second question, go to the third member. If third member is there, sir, ma'am, what was your question? इससे मुझे पता लगता है कैंडिडेट इतनी जल्दी स्ट्रेस में नहीं आता. And in case if you're not able to answer any question, say sorry. But आपको लगता है आपका आंसर बिल्कुल ठीक था और मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ just to check your conviction, तो आप बोलो कि sorry sir, I think we have got difference of opinion, but I believe in what I say. आर्गुमेंट नहीं करना उनसे. आप बोलो कि मुझे लगता है कि मेरा ओपिनियन इसमें अलग है, आपका अलग हो सकता है, बट आई नो दैट व्हाटएवर आई एम सेइंग इज करेक्ट. फिर भी आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो उनको बोलो ओके सर, आई विल अगेन चेक द आंसर एंड गेट बैक. मैं चेक कर लूंगा और वापस आपसे आके बात कर लूंगा. आई विल इंप्रूव, आई विल करेक्ट माय आंसर.
after checking it from the relevant sources, but argue नहीं करना उनसे. जो नहीं करना, some don'ts. Do not create unnecessary humor. It is very easy to start humor, but it's very difficult to control. Please do not lose your temper. In stress interview, would throw certain question which will make you agitated. आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, but do not lose your temper. Maintain calmness and composure of your mind with little smile on your face. Please do not show nervousness. Do not lose eye contact. Do not start mumbling. लोग स्टैमर करना शुरू कर दे टेंशन के अंदर, ये नहीं करना. So have faith in your abilities. इसलिए रिहर्सल जरूरी है. और अगर स्ट्रेस इंटरव्यू शुरू हो गया, 99% यू आर सिलेक्टेड. हम नॉर्मल कैंडिडेट का स्ट्रेस इंटरव्यू नहीं लेते, कोई भी कंपनी नहीं लेती. ऑनलाइन इंटरव्यूज गाइस, कपल ऑफ थिंग्स. पे अटेंशन टू योर वॉइस, सेकंड पॉइंट, and try to make the best word choices, because you've got a couple of minutes online interview, 15 minutes at the max. So आपकी जो lines होनी चाहिए short होनी चाहिए, word should be very crisp. Avoid using excessive fillers. काफी लोगों को आदत होती है बोलने की, you know, I know style मारने की. Please do not go for all these attitudes. Make sure that you're speaking with energy. Energy पूरा लगना चाहिए. 2021 की एज में energy अभी नहीं आएगी तो कब आएगी? क्लियर अ रूम फ्रॉम एनी बैकग्राउंड नॉइस. कोई भी बैकग्राउंड नॉइस नहीं होना चाहिए. काफी लोगों के घर में खाना बन रहा है, कुकर की सीटी बज रही है, ये हो रहा है. प्लीज मेक श्योर ड्यूरिंग इंटरव्यू शांति होना चाहिए. व्हाटएवर डिवाइस यू आर यूजिंग टू हैव योर इंटरव्यू, वो फुली चार्ज होना चाहिए. एक सिंपल बेसिक गलती हम जो करते हैं, वी ऑल कमिट. 16th पॉइंट, चूज द बेस्ट स्पॉट. आप जहां पे भी बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, वहां पे लाइटिंग प्रॉपर होना चाहिए. काफी बार यू आर ओनली वरीड अबाउट योर इंटरव्यू एंड आंसर्स, पर आप भूल जाते हैं कि जहां पे आप बैठे हैं वहां पे लाइट प्रॉपर नहीं है और सामने वाले को ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है. यू आर नॉट एबल टू सी इवन योर फेस प्रॉपरली, तो आपके रिएक्शंस हम क्या ही देखेंगे. सो हैव द लिस्ट ऑफ टॉपिक यू वांट टू टच ऑन. Be concise, clear and confident. Rehearse your answer. Rehearsal very, very important, guys. Please, while rehearsal, record your interview and watch your interview again and again. Take feedback. Work on your shortcomings. Sit up and dress. Even in online interview also, ये नहीं कि normal सा shirt और कुछ भी पहन के बैठ गए. Please make sure that as if take your online interview as offline interview, कि आप पूरा पैनल के सामने बैठे. So dress professionally. And energy से straight, body language अच्छा होना चाहिए. स्पाइन स्ट्रेट, हेड और नेक. काफी लोग तो ऐसे नीचे देख के बात कर रहे होते हैं, ऐसे जैसे वो रैप सॉन्ग गा रहे हैं. If you have seen the videos, रैप सिंगर्स का वीडियो, me wanna crack this interview, me wanna crack this job, ऐसे नीचे करके देख रहे होते हैं. हमें भी उनका गाना देख के ऐसा लगता है कि तेरे नीचे पैसे खो गए जो नीचे देख रहे हैं. So do not give this interview looking down. So बिल्कुल नेक स्ट्रेट होना चाहिए, हेड स्ट्रेट होना चाहिए. Look into the webcam. आपकी आंखें बिल्कुल आई कॉन्टेक्ट उनके साथ बन जाएगा. Shows confidence. सारी गेम कॉन्फिडेंस की है. सिखा तो हम आपको सब कुछ देंगे, कंपनी भी आपको सब कुछ देगी, बट कॉन्फिडेंस, टू इनकलकेट कॉन्फिडेंस इन एनीबॉडी, वो इतनी जल्दी नहीं होता. सो हाउ टू लीड योर इंटरव्यू? तो आस्क योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट. कुछ भी आपने अचीव किया हो, कभी आपके टीचर ने प्रेज करी हो, किसी ने प्रेज किया हो, कोई अवार्ड जीता हो. couple of things. If you are a fresher, then you can take example success stories from anywhere, from your extracurricular activities, outside school or college. Even you were part of any volunteer or NGO. आपने किसी को पढ़ाया, आपका पढ़ाया हुआ कोई पुअर किड अच्छा टॉप करके, वो भी अचीवमेंट है. आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट नहीं है तो come up with these kind of achievements. During your engineering days, you were part of some NGO, और उस एनजीओ में आप पुअर किड्स को पढ़ा रहे थे, अवेयर कर रहे थे, वो अच्छा कर गया लाइफ में, 10th में टॉप कर गया, 9th में अच्छा स्कोर आ गया, 8th में अच्छा स्कोर आ गया. दिस योर अचीवमेंट. तो इससे हमें ये पता लगा कैंडिडेट सिंसियर है. You can also talk about award and honors you received at school or college. Star technique. ये भी एक टेक्निक होती है when you are stating your answer. तो आपसे हम पूछते हैं कि tell us any situation where you performed well. So हम कैसे स्टार्ट करते हैं? You start by explaining the situation. क्या था उस सिचुएशन में, उसमें क्या चाहिए था सॉल्व करने के लिए, what was required to solve that situation during your project or internships, what skill you used or came up with new idea. Next you explain the action. फिर आपने एक्शन क्या किया उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए. Star technique, this is called star. Action you took. A is action. Describe the action you took and result. What was the result of your action? What your result? What were the results of your action? एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है. Star technique. ABC क्वेश्चन को आंसर कैसे कर रहे हैं? स्टार होते हैं when situation is to be explained. Okay, how you handle that particular situation in your project work or internship. क्या किया आपने to improve the efficiency? For example, in resume, if you mentioned that with your suggestion, the efficiency improved by
60%, 50%. So हम बोलेंगे okay, explain Mr. or Miss that what you did exactly to improve the efficiency, then you can use STAR technique. Tip, please rehearse your answer. Make sure they're well prepared. Do not waste a lot of time memorizing them. रट्टा मत मारो answers का. Why this profile? इस job में क्यों आना चाहते हो? Don't say that sir salary चाहिए, घर में support करेंगे, sir कार खरीदनी है, सर घर वाले कह रहे हैं एक नौकरी लग जाएगी तो अच्छी सी शादी भी हो जाएगी. सो टू कम आउट ऑफ दीज आंसर्स, इस इंडियन मिडिल क्लास आंसर्स, नौकरी और शादी और सैलरी, इन तीनों से बाहर निकलो. फर्स्ट जॉब आफ्टर इंजीनियरिंग और एनी कोर्स यू आर डूइंग इज द अपॉर्चुनिटी टू शो द वर्ल्ड योर लर्निंग, एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग, एन अपॉर्चुनिटी टू शो दैट यू गॉट पोटेंशियल. दुनिया को दिखाने का मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू शो दैट यू गॉट पोटेंशियल. After that, we second, third, fourth job में we negotiate only salary. Previous job में I was getting this salary, what I'll be offered in this. So why? ये job आपको क्यों excite करता है? Because you will get the opportunity to show, to learn a lot from your seniors. और वहाँ पे जो seniors होंगे, जो वहाँ पे already काम कर रहे हैं, उनसे सीखने का मौका मिलेगा, and you'll be able to get, you'll get the opportunity to apply your learning. जो 4 साल सीखा उसको मौका मिल रहा है. And this will help you in making good engineer or production manager, floor manager, जो भी job offer, a programmer, and you feel that this is the best, next best step. So again, in this, why this profile on course के अंदर, your answer should be logical, clarity of thought, your commitment and capability, whether you're capable of this or not. So be logical in your answer, guys. So आप फ्रेशर हैं, you all are freshers, so please provide some context. जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं, provide context. So I'll be just taking guys 10-15 minutes extra. Would that be okay with all of you? My YouTube audience in 10 minute extra लूंगा before I wind up. Discuss your future career plans with them. कि आप यहाँ पे ये सीखने के बाद आपको ये आ जाएगा, you'll be able to move on to the next level, and where you'll be handling different projects independently with a team of skilled juniors. That's how we handle this question. Context is very important. Why this job? मैंने इसका आपको एक टिप दे दी है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से कोरिलेट करता है, and you have got certain qualities in you which you think that would be very fulfilling or significant in executing the responsibilities. For example, जैसे introduction के अंदर, I had always keen interest in finance. Even my school college days, I was doing project with equity research firm. ये just answer दे रहा हूँ मैं. With one of the largest bank in UK. आप यहाँ पे कोई company या जो भी आपने किया, I found the concept of company valuation. In your case, it would be something else. जो भी आपको लगा, अच्छा लगा, interesting. That experience further increased my inclination towards pursuing finances career or this job. That's the reason I want to pursue this course or this job. I would like to join multinational or the company like yours to get the opportunity to apply my learning. जो मैंने सीखा है, एक simple introduction मैंने आपको दिखाया. Tips, it has to be person specific answer, guys. Every answer should revolve around your personality, your learning. Therefore, it's very important to introspect. Know your goals, likes and dislikes, your strength and passion. Very important. Managing first impression, guys. Well begun is half done, as they say. So managing first impression begins with awareness. Once you are aware of strengths and weaknesses, you'll be able to handle the answers and questions easily. No formula. Just observe and listen to yourself. SWOT करो अपना आराम से बैठ के. Ask your seniors. Take the help from your teachers, mentors, placement coordinators, placement head, committee head, जो आपसे पहले इन सब चीजों स्टेजेस से जा चुके हैं. Non-verbal, make eye contact. You should know how to conduct yourself. Facial expression should be positive, full of cheerfulness. Gestures should be positive. Overall energy should be ample. Wear simple yet formal clothes. I'm not talking about the branded clothes. I'm talking about only formal clothes. Please do not wear, girls, heavy jewelry or something. Know what you are wearing. Attire. Your clothing sense will reflect your personality and thought process. So guys, learning. Interview doesn't know you, so your impressions would be based on your perception कि आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, your resume. So you need to learn how to anticipate and manage your perception. आप क्या impression दूसरों के ऊपर दे रहे हैं. So therefore it has to be, you have to be very clear and precise. Avoid monosyllabic responses. एक ही टोन में कभी नहीं बोलना. If you are feeling excited about any achievement in your life, थोड़ा सा वॉइस को इंक्रीज कर सकते हैं, थोड़ा सा cheerfulness आप दिखा सकते हैं when you were awarded, when you were admired, appreciated by
your seniors, juniors, teachers, head of the department, etc. Avoid filler words. I know, you know, नहीं बोलना. Some don'ts in interview, वैसे तो ये offline के लिए. Please do not be late. Make sure that you're on time. You open your screen here 15 minutes before the interview time. Open your screen and everything should be well set. Do not walk. Do not show any kind of laziness, lethargy, or disinterestedness on your face. Do not be arrogant, aggressive, or vain. Do not show lack of energy. Do not make excuses for adverse condition. काफी लोग जो बोलते हैं CGP क्यों कम रहा? Because सर घर में कुछ प्रॉब्लम था. अगर जेन्युइन है तो ठीक है, बट एक्सक्यूज मत बनाओ इस चीज को. Say that you were not able to manage your time, studies time with other extracurricular activities. Then you learned, जब आपने सीख लिया, जब आपको पता लगे कि you were not able to manage initially, then you started giving time. तो आप थोड़ा सा प्रोग्रेस भी दिखा सकते हैं. फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड में प्रोग्रेस हुआ, नो डाउट. यू वर नॉट एबल टू रीच 7, बट आप प्रोग्रेस तो दिखा ही सकते हैं. किसी एक सब्जेक्ट में प्रोग्रेस दिखा सकते हैं. प्लीज डू नॉट कंडेम योर पास्ट इंस्टीट्यूशन. काफी लोगों को अपने स्कूल और कॉलेज की बुराई करने की आदत होती है. ऐसा मत करें. उन्हें लगेगा कल ये हमारे कंपनी में जॉब करेगा और यहाँ से जाने के बाद हमारी बुराई भी करेगा. प्लीज डू नॉट डू दिस. डू नॉट कॉन्ट्रडिक्ट योर ओन आंसर्स. डू नॉट शो विजिबल साइन ऑफ इरिटेशन. काफी लोगों को लगता है कुछ क्वेश्चन पूछो तो उनके चेहरे पे इरिटेशन नजर आता है, इसने ये क्यों पूछ लिया. प्लीज अवॉइड दिस these kind of expressions on your faces. Do not get into unnecessary arguments. CGP's cumulative grades score, Sachin, score जो आपका परसेंटेज होता है. Success mantras. So guys, interview में होता क्या है? See, primarily interview is kind of buyer-seller interface. Buyer-seller interface. The panel is the buyer, the company is the buyer, and you are the seller. आप अपनी पोटेंशियल को सेल कर रहे हैं कंपनी को. So buyer has very specific need. Every company's HR is very, very objective. Let's say you go to any market to purchase vegetables. जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं तब भी आप ध्यान से सब्जी को चुनते हैं, तो एक कैंडिडेट को पिक करने आए हैं. सो बायर हैज वेरी स्पेसिफिक नीड. उन्हें क्या चाहिए आपके अंदर. नाउ इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो देम दैट वी हैव गॉट ऑल द क्वालिटीज व्हिच यू आर लुकिंग फॉर. वी नीड टू प्रिपेयर आवर होमवर्क अकॉर्डिंगली. इसलिए जो हम दिखाना चाहते हैं उसको कैसे बोलें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये हमें सीखना पड़ेगा. So, जो हम दिखाना चाहते हैं, therefore value proposition should be based on mapping between our core competence and the expectation quotient. So we need to demonstrate competence. जो qualities दिखानी है relevant example के साथ introduction के अंदर दिखाओ, and that too with contextually strong inputs. Very important. Therefore, it's lead strategically. Okay, Parul, your answer. So panel is there to assess you. Panel जो होता है आपको assess करने के लिए आ रहा है. Not to intimidate or scare hell out of you. Panel is not like they would be carrying AK-47 in their hands. और आपका गलत आंसर हुआ तो गोली निकलेगी और point blank range and will leave this world forever. No. Panel तो assess करने के लिए आया. आपके कॉलेज में आ रहा है, ऐसे बहुत सारे कॉलेज में जा रहे हैं. उनके सामने हर रोज n number of candidates आते हैं. So they are here to assess your qualities. Prabhat, it's better to avoid Hindi. It's better to avoid Hindi. So they feel that you'll not be able to communicate properly. So it should be 70-80% English and 20-30% Hindi would serve the purpose. But if your company's HR, they are all from Southern India, then we are gone. They'll not be able to understand your Hindi. So it's better to stick to formal English. And introduction is the biggest opportunity. So अपना introduction session के बाद अच्छी तरह से बनाओ. You still have got the time. I don't know when the companies will be coming to your college. So when your placement is starting, or has it already started? कुछ लोग दे चुके हैं एक दो interview for sure. How many of you already have taken 1 or 2 interviews? And all anybody who has already been placed, got the job? कईयों को हो चुका होगा अब तक तो. And काफी लोगों में जिनका भी होना है. So communicate effectively, guys. Communication has 2 dimensions: verbal, the spoken part, the written part, and non-verbal. Non-verbal is your body language. So body language covers 55%. काफी लोगों को लगता है communication is equal to speaking English or using proper words, high-five words. No, communication words 7% role. Words play 7% role, and your voice 38%. Body language 55%. So your body language you should be positive, energetic, sincere. आपके expressions ऐसे होने चाहिए. So effective communication का एक ही measure है, your ability to achieve the desired outcome. अगर आप सामने वाले के ऊपर अच्छा impression दे पाए, that means your communication skills were perfect.
इसलिए record your interview. Nowadays we all have got smartphones, so mock interviews लो, answers की तैयारी करो, and उसको देखो recording को. Behave appropriately, guys. Offline interview में तो as soon as you enter the interview arena or the interview chamber, we start scanning your body language. So the way we speak, we answer any question, the way we sit, walk, carry ourselves, conduct ourselves, they all reflect our behavior, thought process. काफी बार तो psychologist भी होते हैं in the panel to assess your behavior, thought process. So make sure that you behave appropriately. So we're done with today's session, guys. Okay, Girish, if it is Vasnani, Girish, so if they are speaking in Hindi and you're comfortable with English, please. वैसे तो अगर उन्होंने हिंदी में पूछा है तो आप थोड़ा सा हिंदी में बोल के come to the English. They just want to check your communication skills in terms of speaking English. Yes, Divam, this session is live on YouTube also. So our team would be sent YouTube link. I tell my team members, the coordinator from my side and you coordinator also to get the YouTube link of this entire session. Definitely. So guys, the time has come to wind up this session. So my name is Rajiv Pandey and I was taking today's session. So guys, आपको कुछ समझ आया? Did we get something out of today's session? Are you now a little more confident? Or did I kill your time? आपको ऐसा तो लगा आपका time waste हो गया? On 26th of January, छुट्टी का दिन था. So did we get something out of this session? Okay guys, see, all the tricks which I have shared, all the tips which I have shared, everything is fine, everything aside, but ultimately it is all about your confidence. It is all about your rehearsal and your homework. So make sure that you rehearse a lot, prepare, write your answers, keep modifying your answers. जिस कंपनी के लिए आप जाना चाहते हैं उस कंपनी के बारे में थोड़ा सर्च करें, log on to their websites and try to modify your answers, present them. अब कंपनी आईटी की है तो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का नॉलेज आपसे जानना चाहेंगे. इवन आपको नहीं भी पता, then you can tell them that at least you tried your hand in couple of softwares, you know about couple of things. Okay, fine guys. So all the best for your placement drives and hope that you get the job, desired job, and be happy, be positive and have faith. जब तक आपको अपने पर confidence नहीं होगा, मैं आपके ऊपर है, कोई आपके ऊपर faith नहीं करने वाला. So you need to tell the world that you have got confidence in your abilities, you have got faith in your abilities. तब सारी राहें आपके लिए खुल जाएंगी. So with this quote, let's switch off our cameras and mic. And once again, all the best. Stay safe and stay healthy. वैक्सीन आ गई, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग घूमना फिरना शुरू कर दें. एंड काफी लोगों को लगता है कि सर हम ड्यू की बोतल पी के बाहर जाते हैं क्योंकि डर के आगे जीते हैं. ड्यू, डरना मना है, डर के आगे कोरोना है आजकल, अभी भी है. सो आई डोंट नो फ्रॉम विच एरियाज यू ऑल आर, बट अगेन ऑल द बेस्ट once again. This is your host Rajiv Markane signing off for the day. Enjoy your life, enjoy your evening. See you next time around with some more sessions. Okay guys, bye.